Okay, so this is May June 2020 paper 2 variant 2. उसके हमने first 6 questions जो है वो कर लिए थे in our last session. Today we're going to start with question number 7 and we will complete this paper today. Okay. All right. So the table shows some values for y equals 4 raised to power x. So it's an exponential function. X जो है वो power के अंदर है. We have to first complete the table. So we just input values of x here. So 4 raised to power 0, x की जगह 0 input कर दें. 4 raised to power 0 is 1. Anything raised to power 0 is basically 1. 4 raised to power 0.5, that means square root of 4. That is going to be 2. And then you have the rest of the table already filled. Okay, then you have to draw the graph for... सर एक दफा सर बताइएगा पेपर कौन सा? So this is this one, May June 20, paper 2, variant 2. Okay, हम यही कर रहे थे, इसके हमने बाकी क्वेश्चन करने थे. All right. So now we have to draw the graph of y equals 4 raised to power x, and we have the domain given for this 0 से लेकर 3 तक. So हम क्या करेंगे, पॉइंट्स को प्लॉट कर देंगे. 0 के ऊपर 1 है, so 0 पे you've got 1, so you've got 1 point here. Okay, so what happens to that? I pen the red here. Okay, all right. So 0 के ऊपर 1 आ गया, so that's one point. Then you have 2 and 0.5 के ऊपर 2. And this 0.5, this value is 2, so that's right here. 0.5, remember. This is 1.5, this is 2.5. Okay, then you have 1 and 4. So 1 ke upar 4, 1 and 4, that is going to be here. Then 1.5 and 8, 1.5 and 8, that's right here. 2 and 16, 2 and 16, that's here. Then you have 2.5 and 32, 2.5, 32, and 3 and 64. 3 के ऊपर we got this value, that's 64. ठीक है, ये points start कर दें, इनको join कर देना using a smooth curve. Now it's a typical exponential function वाला graph, so which looks like this. So let's draw this. Again, it may take you a few attempts to make this work. Okay, now. All right, so I'm going to put it this way, let's try this way. Okay, so that's almost what our curve is going to look like. यहाँ से नीचे से थोड़ी steady होगी. I'm just going to correct that part quickly. So that's this part here. So, okay, so this is pretty much what the curve is going to look like. Okay, this is our graph. ये हमने graph draw कर दिया. Okay, so it's a fairly smooth curve. It should be passing through all the points. So ये draws a point. But that's okay. So this is our curve. ये हमने draw कर ली. उसके बाद let's look at the next part. So वही standard part, by drawing a tangent, estimate the gradient of the curve when x is equal to एक point के ऊपर आपने gradient estimate करना है. So that's this point here. This point का gradient estimate करना है. Right. So let's draw the tangent. So we have to make sure that our pencil is sharp here. You have to be using a lead pencil, remember, or कोशिश करें कि it's as sharp as possible. So try. So your tangent may look something like this. ठीक है, उस point को touch करना चाहिए sir, और दोनों sides पे it should be almost similar gap between the line and the curve.
थोड़ा सा इसको और स्टीप कर देता हूँ. So let's say like this and this. Okay, so that's your tangent. Now what you have to do is you have to take 2 points on either side. एक ऊपर वाली side पे ले लेंगे point, एक नीचे वाली side पे ले लेंगे. So let's take a point here which is easy to read. So for instance I could take this point. This is अच्छा, so this is 2.5. अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखना आपने कि आप रीड सही कर रहे हो अपनी वैल्यू को, और if you think you're going to make a mistake there, maybe take another value. Let's say this value will be easier to read अगर हम ये value ले लें यहाँ पे, right? So this is going to be 2.5, and on the y-axis this is 20, 25, 26, 27. 2.5 and 27, that's one value, and the other will be on the other side. नीचे वाली side के ऊपर दूसरी value ले रहे होंगे. So you can take for instance this value here, right? आपने देखना जो बिल्कुल किसी box की corner से pass कर रही हो. So if I take this point here, आपको देखना है इसको read किस तरह करना है. This is 1.5, 1.5 से 2 तक जा रहे हैं, ठीक है? So इसका middle में क्या होएगा? 1.75. So every small box is 0.05. So you 1.55 and then 1.6. This is 1.6 here. On the y-axis, we have 7 there. Okay, 2 points are we find the gradient y2 minus y1 over x2 minus x1. So we can say this is 27 minus 7 divided by 2.5 minus 1.6. ठीक है, और इससे आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी. ऑफ कोर्स यू हैव टू लुक एट योर ओन ग्राफ. आपके ग्राफ के ऊपर जो वैल्यूज आ रही होंगी आपने उन्हीं को यूज करना है. सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग. सो इफ आई वर टू calculate this will turn out to be 20 divided by 0.9, which is 22.2. So I'm getting 22.2 from here. That is the gradient that I'm getting, and I'll be writing that here. Okay. So it's वही था standard part हमारा. Now let me just look at the range that we have here for the tangent. Yeah, so the given range is anything between 18 and 27. So 18 or 27 के दरमियान कोई number आपका आ रहा होता, that would be acceptable. अच्छा, then it says the solutions of the equation can be found from the points of intersection of y equals 4 raised to power x and y equals 20x minus 12. Okay, we got two equations. उनको वो कह रहे हैं कि इनको यूज करके हम इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं. एग्जैक्टली. सो यहाँ पे देखें y तो नहीं है इस इक्वेशन के अंदर. सो you know that y is equal to 4 raised to power x and you know that y is equal to 20x minus 12. आप उन दोनों को इक्वेट करते हैं. What do you get from that? Because you remember, इसी तरह हम simultaneous equation solve करते हैं. We have the same subject on for both equations. In this case, तो आप एक की y की वैल्यू दूसरे के अंदर इनपुट कर दें. We get 4 raised to power x equals 20x minus 12. Now, let's take everything to one side. Left side पे ले आते हैं. We get 4 raised to power x minus 20x plus 12 equals 0. अच्छा, ये फॉर्म तो हमारे पास आ गई, लेकिन उसने जो हमें दिया हुआ है वहां पे देखें क्या है. It's 3 into 4 raised to power x plus ax plus b. So let's write that form down here. उसने क्या दिया हुआ है? 3 into, ये ऐसे लग रहा है जैसे इसने मिड टर्म ब्रेकिंग की है शायद बीच में. इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग की है. well, not exactly. देखिए बाकी सब कुछ तो उसी तरह का आ रहे हैं ना. You got something into x here, right? We have a constant here. ये एक और चीज है कि सबको डिवाइड किया है 3 से सबको मल्टीप्लाई किया ना. लेकिन 4 raised to power x हमारे पास 4 raised to power x आ रहा है, उसके पास 3 into 4 raised to power x आ रहा है. अब इस फॉर्म में कैसे लेके आ सकते हैं? हम अपनी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ. So we get 3 into 4 raised to power x. पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. So that's minus 60x plus 36 equals 0. अब हमारे पास वो फॉर्म आ गया जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं, because now these two are comparable. These are the same numbers. तो अब हम कह सकते हैं since these are the same numbers, therefore a is going to be minus 60 and b is going to be equal to 36. So a is minus 60 and b is 36. Does that make sense?
ये clear है? जी सर। Okay, so we have to be a bit careful कि आपने जब compare करना है उससे पहले you have to have the same form. हमारे पास 4 raised to power x आ रहा था, उसके पास 3 into 4 raised to power x है. So what we can do is we can multiply the whole equation by 3 and that gives us this. All right, good. Now, by drawing the line y equals 20x minus 12 on the grid opposite, find all the solutions of this. Okay, so now we have to draw that line. So that's 20x minus 12. Achha. A straight line कैसे draw करते हैं? We need any 2 points. So let's take 2 points. Y equals 20x minus 12. So x की values वहाँ पे कहाँ से कहाँ जा रही है? We're going from 0 to 3. अच्छा 0 और 3 के दरम्यान में कुछ ले सकते हैं, उससे बाहर नहीं जा सकते. So let's take some values of x and y. Let's take 0. अगर हम 0 इनपुट करेंगे तो क्या आएगा? y minus 12 आ जाएगा. y minus 12 भी हमारे ग्राफ के ऊपर नहीं आ सकता, right? So we cannot take 0 either. Let's take 1. 1 इनपुट करते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 20 into 1 minus 12, that is 8. अच्छा, let's take another value. थोड़ा सा डिस्टेंस के ऊपर 3 ले लेते हैं. If we input 3 there, 20 into 3, that is 60. 48. 12, that's 48. So we get 2 points. इन दोनों points को plot कर दें. 1, 8. So 1 and 8, that's right here. And then you have 3 and 48. 3 and 48. So that's this. You दोनों points plot कर दिया. Just need to join them using a straight line, making sure that you extend it on both sides. So if I were to draw this line here now, this is what it looks like. In fact, let me just start from the other side. Okay, let's go extend कर सकूं. Okay, so this is what my straight line looks like. All right. अब हमें क्या करना है? इसको यूज करके we have to find the solutions of this equation here. अब ये equation क्या represent कर रही है? This equation is basically representing when we have equated these two things. इनको equate कर देंगे तो हमारे पास उस equation के solutions आएंगे. So equate करने का मतलब graphically क्या होता है? जब वो intersect कर रहे हैं, जब वो एक ही point के ऊपर आ रहे हैं, जब वो intersect कर रहे हैं एक दूसरे के साथ. So what do we get here? We get one point here. This point is coming right here, almost. Yeah. So that's 1 point. इसको देख लेते हैं क्या है. So it's 2.6, 2.7, 2.7. अच्छा नहीं 2.65, 2.65 और 2.7 के दरम्यान में है. 2.65 और 2.7 के दरम्यान में आ रहे हैं मेरे लिए. So I can say it's almost. 2.75 आ रहा है. Yeah. So it's on your graph, of course. आपका 2.75 आ सकता है. That's fine. I'm getting 2.67 के करीब आपके लिए. मुझे देखिए 2.65. Assalamualaikum sir. Sorry, I'm late. So okay, 2.65 और 2.7 के दरम्यान में कहीं पर आ रहा है. So I can say it's like 2.67. Similarly here, I'm getting 1 point here. अच्छा, अब ये कहाँ पर है? 0.6, 0.7, 0.7 और 0.75 के दरम्यान में है. So this is somewhere around, let's say 0.72. So ये मेरे पास 2 points आ रहे हैं. That's what I write there. Yes. मेरा 0.65 आ रहा है ये जो. Yeah. Okay. Let me just check the range for you in a minute. 0.65. 0.65 हो नहीं सकता वैसे. एक मिनट सर. अगर आपकी लाइन ठीक है, या तो आपकी लाइन में मसला है, कोई स्ट्रेट लाइन में मसला है, या मेरी लाइन में मसला है. Let me just check. सर मतलब 1 और बहुत 8. नहीं सर, मेरा 21 आ रहा है. मेरा 21 आ रहा है, बिल्कुल सही है. 21. अब्दुल्ला बेटा वेट करें एक मिनट. हम नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं. हम नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं. We have 0.72. वो टेंजेंट वाला कह रहा था. So 0.72 and 2.67. So let's write here 0.72 and 0.5 ये आ गया. 67. So we have these two values. ठीक है. 0.7 के पास ही है. बिल्कुल एक आधे बॉक्स का फर्क है 0.75 से.
All right, so this is what I'm getting. Now the range given is one point has to be from between 0.7 0.8 और दूसरा जो है it has to be between 2.65 and 2.75. ठीक है, इनके दरम्यान में अगर आपके पॉइंट्स आ रहे हैं they are acceptable. Okay, outside then you will not get you lose 1 mark for that. You'll get 1 mark at least, but you'll not get the other. सर मेरा 2.65 आ रहा है, वो सही है क्या? Yeah, 2.65 is fine. That's सही है। acceptable. Okay. So now it says here's a sketch of the graph of the सर बस 1 मिनट के लिए वो ऊपर वाला पार्ट दिखा देंगे, मैं लेट आया हूँ। ये वाला part. हाँ जी ये वाला ओके। हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया basically. y equals 4x to 5x, y equals 20x minus 12. और फिर उसको कंपेयर किया उसके साथ, लेकिन कंपेयर करने के लिए we have to multiply by 3 here. So 3 आ रहा था, हमारे पास 3 नहीं आ रहा था, इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया by 3 at this point. Okay? सही हो गया, ठीक है सर। All right, let's move on. So here's a sketch of the graph of a quadratic function. So now this is the quadratic function that we're given. Now this is a very tricky question. I've seen this before somewhere because a lot of people ask about this question. So we have this curve that has a maximum point here at P and Q. Okay. Achha. Find the value of P and the value of Q. आपको your turning point figure out करना है. You do not have the equation of the curve. ठीक है, आपके पास सिर्फ ये x intercepts है उसके और आपके पास y intercepts. ठीक है, it's a 3 mark question. अब इसके अंदर p की वैल्यू तो बहुत आसान है, right? Because you know that it's just going to be between -2 and 4, the midpoint of -2 and 4. आपको पता है quadratic function हमेशा symmetric होता है. So अगर ये एक intercept -2 है, दूसरा intercept 4 है, ये जो दरम्यान में होगा बिल्कुल जहाँ पे turning point आ रहा होगा, this point is going to be 1. ये 1 होना चाहिए. -2 और 4 का midpoint, right? So p की value यानी जो x coordinate of the turning point है वो तो 1 है. That's fairly straightforward. There isn't really much that you need to do for that. The problem is this other point. ये point कैसे find करेंगे? ये point नहीं, the y coordinate of that turning point. How do you figure this out? That is the question. Okay, so now we have to make use of these x-intercepts that are given to us and also this y-intercept that's given. Okay, इनको use करके हमें किसी तरह से एक equation लिखनी है. Okay, अच्छा. अब तो ये उस तरह नहीं होगा कि पहले वो लिखेंगे y is equal to mx plus c. y equals mx plus c कहाँ से आ गई? This is not a straight line. It's a quadratic function. ये भी है सर. It's a quadratic function, right? It's not a straight line. ठीक है. अच्छा. अब इसमें एक चीज तो आपको पता है कि x y intercept 8 है. तो अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म पे यूज करो, if you were to use that ax square plus bx plus c, उसमें आपको ये पता है कि जो c है ना, c y intercept होता है इसके अंदर भी, c की वैल्यू तो 8 है. That much you know, right? c की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है? वो 8 आ रही है. Does that make sense? Because आप चेक कर सकते हो, आपको y intercept पता है, आप y intercept दिया हुआ है ना, so y intercept क्या होता है? It's when you put x equal to 0, right? तो आप x की वैल्यू 0 input करते हो, और yeah, let me actually just explain that to you. So it's a slightly longer method first, but then I'm going to explain to you first. But then we will, try to think about it another way as well. So एक point आपके पास ये जो दिया हुआ है, this is 4 0. ठीक है, एक point ऊपर जो दिया हुआ है, that's 0 8. ये जो नीचे वाला पॉइंट है that's 2 and 0. ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आपके पास हैं, ये तीनों कर्व के ऊपर लाई करते हैं. They should satisfy the curve, the equation of the curve. तो आप क्या कर सकते हो? You can put these points in the equation. आपके पास ये equation होनी चाहिए, है ना? It's a quadratic curve, so it's of this form ax squared plus bx plus c. What you can do is you can say let's input 0 and 8, right? X की value 0, y की value 8. That means 8 is equal to a into 0 plus b into 0 plus c. c आपके पास 8 आ गया, राइट? आपको वैसे नजर भी आ रहा है, आपको पता होना चाहिए y intercept जो होता है वो आपका ये c होता है, बिकॉज बाकी x
जब x 0 होता है बस सिर्फ c बच जाता है. So from there what you get is y is equal to ax square plus bx plus 8. ये तो आपके पास आ गया यहाँ से. Okay. Now what else can we do here? What else can you do here? You can say let's input these other points. एक दफा आप ये input कर दो. Put -2 and 0. That also satisfies the curve. Put 4 and 0. That also satisfies the curve. है ना? तो आप क्या करोगे अब? You will just input these values -2, 0 and 4, 0. उससे क्या होता है? -2x की जगह y की जगह 0. So we have 0 equal to a into -2 का square plus b into -2 plus 8. And that gives you 0 equals 4a minus 2b plus 8. ठीक है, यहाँ से इस तरह बस एक और इक्वेशन आएगी. वह 4 0 इनपुट करोगे, you get 0 equals a into 4 का square plus b into 4 plus 8, and that gives you 16a plus 4b plus 8 equal to 0. Now we have two simultaneous equations. We can solve them and find the values of a and b, right? So what you can do is you can say इस वाली इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 के साथ, so let's do that. इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, and this will become 8a minus 4b plus 16 equal to 0. Now what I can do is I can do elimination. So I've got one equation 8a minus 4b plus 16 equals 0. ये left वाली, right वाली equation क्या है? That's 16a plus 4b plus 8 equal to 0. I can add both of them. That gives me, this gets cancelled. I'm left with 24 times a plus 24 equals 0. a की वैल्यू -1 आ गई यहाँ से. तो आप किसी भी इक्वेशन में इनपुट कर दो इसको वापस, तब बस b की वैल्यू आ जाएगी. So you have 8 into -1 plus minus 4b plus 16 equals 0. यहाँ से बस क्या आता है? You get minus 4b equals उधर जाएगा -8 and b equals 2. ठीक है, a और b की वैल्यूज आ गई आपके पास. a और b की वैल्यूज आ गई आपके पास, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, वो फंक्शन की इक्वेशन आ गई आपके पास. That's basically this. That's y equals minus x square plus 2x मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया? plus 8. किसको मल्टीप्लाई बाय 2 इसलिए किया था कि -2b और -4b को वो इक्वल करके. yes, एलिमिनेशन करने के लिए किया मैंने. वो तो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी है ना, एलिमिनेशन करने के लिए कि -2b था यहाँ पे, इधर 4b था, तो यस इसको -4b करने के लिए ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए. एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रहा था, उसके लिए मैंने किया था. ओके. और सर जो ये 4a - 2b + 8 के नीचे लिखी हुई है जो इक्वेशन, सर ये सारी यही है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है, ये वाली? है ना सर? जी सर. जी बिल्कुल, सर वो वही है वाली ना सर, इक्वेशन बस 2 से मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई किया कर दिया. सर. उसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया है, इसलिए किया है क्योंकि ये -4b बन वो जाए क्यों किया? और ये +4b था एलिमिनेशन करने के लिए ना. अच्छा, so let me just write it down again. So I've got one equation here. एक मेरे पास ये लेफ्ट वाली इक्वेशन है 4a minus 2b plus 8 equals 0. एक ये इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन. इसको अगर आप 8 को बेसिकली राइट साइड पे लेके जाना चाहते हो तो ले जाए, दैट्स फाइन. दूसरी इक्वेशन मेरे पास है 16a plus 4b plus 8 equals 0. ये दो इक्वेशन है मेरे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन. इनको सॉल्व करना है मुझे. ओके, तो मैं एक तो सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूँ, एक में से मैं किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बना लूँ, दूसरे में इनपुट कर दूँ, दैट्स फाइन, यू कैन डू दैट. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? I can just do elimination. So ये भी कर सकते हैं. मैं ऊपर वाली इक्वेशन को सिंपलीफाई करूँ तो मुझे मिलता है 2a minus b plus 4 equals 0. नीचे वाली को सिंपलीफाई करूँ, 4 से डिवाइड कर दूँ, I get 4a plus b plus 2 equals 0. That would have been even easier. यहाँ पे b भी कैंसिल हो गए. You're left with 6a plus 6 equals 0. यहाँ से a की वैल्यू -1 आ गई. बेसिकली साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ मैं सिर्फ. एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने के लिए मैंने सिर्फ उसको मल्टीप्लाई किया था 2 के साथ ताकि कैंसिलेशन हो सके वहां पे. सर मुझे बस ये समझ नहीं आया कि हम ये मतलब हमने पुट 4 0 पुट -2 0 हमने ये क्यों किया?
देखें ये कर्व है हमारे पास, ये कर्व है, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक कर्व है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक कर्व पास कर रही है 3 पॉइंट से, 0 8 से भी पास कर रही है ना, -2 0 से भी पास कर रही है और 4 0 से भी पास कर रही है। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये इक्वेशन फाइंड करना चाह रहे हैं, हम ये इस कर्व की इक्वेशन फाइंड करना चाह रहे हैं। सिंस इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट्स गोइंग टू बी ऑफ दिस फॉर्म, y equals ax square plus bx plus c, इसी फॉर्म की होगी ना, जो मर्जी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक फॉर्म तो ये होगी। हमें a b और c की वैल्यू चाहिए इसके अंदर, a b और c क्या है वैल्यू, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों पॉइंट्स को इसके अंदर इनपुट कर देते हैं बारी बारी, वो तीनों इसको सेटिस्फाई करने चाहिए, हमारे पास कुछ इक्वेशंस आ जाएंगी जिससे हम a b और c की वैल्यूज फिगर आउट कर, ठीक है। जब हमने 0 8 पुट किया, we got c डायरेक्टली, c की वैल्यू आ गई हमारे पास, हमने बाकी दोनों पॉइंट्स पुट किए तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस बनी, इनको हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास a और b की वैल्यूज आई, तो ये बेसिकली इक्वेशन ऑफ दैट कर्व है जो ऊपर लिखी हुई है। Does this make sense? Yes, sir. अभी इक्वेशन आ गई, आपको पता है कि p की वैल्यू 1 थी, आप क्या करो, आप बस इसके अंदर इनपुट कर दो, पुट x इक्वल 1, उसके ऊपर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y भी आ जाएगी आपके पास, -1 का स्क्वायर प्लस 2 into 1 plus 8, and that gives you y equal to 9 here. तो q की वैल्यू हमारे पास therefore should be 9, ये हमारे पास इधर 9 आ गया, ठीक है। हमारे पास जब इक्वेशन आ गई एक दफा कर्व की इक्वेशन जब आ गई, उसके बाद हमने सिर्फ ये x कोऑर्डिनेट उसका इनपुट कर दिया, corresponding y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई, दैट इज 9. This is one possibility. This is of course much longer, so this is one way you could think about it. Okay, so if this makes sense to you, then by all means you can do this. Now let's do a quicker method. Let's do something quicker than this. Minahil, so we have the equation, right? We got the equation of the curve. जब curve की equation आ गई हमारे पास, जब हमारे पास curve की equation आ गई, तो we know that this curve passes through this point, right? इस point से pass करती है, हमें इसका x coordinate पता है, we want to find the corresponding y coordinate. How do we find that? We just input x equal to 1 in that equation, और उससे ऊपर हमारे पास corresponding value of y आ जाएगी उस point के ऊपर. We have y equals -1 का square plus 2 into 1 plus 8, and that gives us 9. सर Yeah. सर -1 हम किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं, ये 8a वाली पे भी डाल सकते हैं, 16a वाली में भी डाल सकते हैं, आंसर सेम ही रहेगा। x की वैल्यू 1, जी सर, a की वैल्यू जो आ रही है ना, a इज इक्वल टू -1 जो आ रही है, उसकी बात कर रहा हूँ सर। उसको हम इस इक्वेशन में भी डाल सकते हैं ना, 8a वाली, 8a - 4b 6 + 16, या फिर ये वाली 16a। इसमें डालेंगे तो क्या फायदा होगा, उससे तो सिर्फ वेरीफाई होगा आपकी आंसर ठीक है कि नहीं है। हमें तो ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन था ओरिजिनल, ये चाहिए था, इसमें हमें a की वैल्यू फिगर आउट करनी थी, क्या थी, जब हमने a की वैल्यू फिगर आउट कर ली तो उसमें डालेंगे ना जाके। ठीक सर, अच्छा ताकि फिर b निकल आएगा, सॉरी, तो ताकि फिर b आ जाएगा ना, अच्छा वरना b उसमें तो फिर निकालने के लिए, दोबारा अच्छा b निकालने के लिए कह रहे हैं, b में हाँ वो तो मैं कह, b निकालने के लिए आप किसी में भी डाल दें, आप इसमें भी डाल सकते हैं, इसमें भी डाल सकते हैं, इसमें भी डाल सकते हैं, दैट डजंट मैटर, वो सब किससे भी आ जाएगा, ठीक है सर, वो ठीक है किससे सर। भी आ जाएगा। आई एम जस्ट सेइंग कि जो a और b की वैल्यूज आ जाएंगी, a b और c की वैल्यूज वो भी आपने वापस यहाँ पे इनपुट कर देनी है, ताकि आपको पता चल जाए कि ये यस सर, क्वाड्रेटिक फंक्शन है जो आपके पास। ठीक सर। अच्छा, now let's do something quicker than this, right? So this is first thing that might come to mind. आप ये points input कर दो बस उस equation के अंदर, but there's another way that's much quicker. So erase this part as well. अच्छा, ये हमने x coordinate तो figure out कर लिया, so we are done. That's what we're done with already. तो वो तो मसला नहीं था, वो तो सिर्फ midpoint find करना था, so that's something that we know already. अच्छा, देखिए कोई भी आपके पास कर्व होती है
जो जिसको अगर आप सॉल्व करते हो, so for example if I have the curve like this, x square plus let's say x square minus 2x and x square minus x plus 1 equals 0, or that will give us, इसको प्लस करें उसका माइनस करें क्या आता है। अच्छा, let's do something else. So अगर हम ये यूज कर लें, let's say we have this quadratic equation, x square plus 7x plus 12 equals 0. This is the quadratic equation that we have. Okay, how do we solve this quadratic equation? हम इसको फैक्टराइज करते हैं। इससे हमारे पास दो फैक्टर्स आ जाएंगे, एक फैक्टर इसका आएगा x plus 4 और दूसरा फैक्टर आई थिंक इसका आएगा x plus 3। ठीक है, इससे हमारे पास दो सॉल्यूशंस आते हैं, x equals -4, x equals -3, right? If we have a quadratic equation like this, what do we do with this? इसको सॉल्व कैसे करते हैं? We factorize, ठीक है, मिड टर्म ब्रेक करके फैक्टराइज कर लिया, let's say this is what we come up with। उसके बाद आप क्या करते हो? You equate these things to 0 individually, so you basically say either x plus 4 is equal to 0 or x plus 3 is equal to 0। यहाँ से आपके पास आ गया x equals -4, इधर से आपके पास आ गया x equals -3। अब ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा होता है? ये जो x की वैल्यूज यहाँ पर आई हैं हमारे पास, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही होती हैं? If you have ये कर्व है आपके पास, if you had this curve, it would look like this, the U-shaped curve, because x square का कोएफिशिएंट यहाँ पे पॉजिटिव है, U-shaped curve होगी। जो -4 और -3 वैल्यूज आई हैं, these are basically the x-intercepts, जहां पे ये कर्व x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, ये वो वैल्यूज होती हैं। हम इनको सॉल्व करते हैं, जो आपके पास इंटरसेप्ट्स आते हैं, जो आपके पास रूट्स आते हैं, these are basically x-intercepts। ये वैल्यूज आपके पास आ रही होती हैं उधर। Does this make sense? Yes sir. है ना? ये तो आपको पता है कि जो रूट्स होते हैं वो x-intercepts होते हैं। Now what you want to do here is you want to do we want to go the other way around in this case। हमारे पास कर्व है, we have the graph here। हमें ग्राफ के ऊपर पता है कि इसके दो x इंटरसेप्ट्स हैं, एक -2 है, एक 4 है। हमें अब वापस इस प्रोसेस को यूज करके वापस ओरिजिनल कर्व चाहिए। ठीक है, now how can we find that? We can say since x is equal to -2 or x is equal to 4, ये दोनों आपके पास x इंटरसेप्ट्स आ रहे हैं। Let's go backwards। इससे ऊपर वाले स्टेप के ऊपर वापस जाएंगे तो क्या होएगा? X is equal to positive 2 equals 0 और x minus 4 is equal to 0। -4 equal 0। ठीक है, अब इससे पिछले स्टेप पे गए, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट लगा देंगे, तो get x plus 2 देन इसको to x minus 4 मल्टीप्लाई कर देंगे equal to 0। equal 0। ठीक है, और यहाँ तक clear है? फिर यस। अच्छा, अब इसको एक्सपैंड करते हैं। This is not the final result here because देखें बहुत सारी कर्व्स ऐसी हो सकती हैं जिनके यही इंटरसेप्ट्स हो, -2 और 4। फॉर एग्जांपल मैं एक ये कर्व ड्रॉ कर दूं, समथिंग लाइक दिस, इसके इंटरसेप्ट भी वही हैं, है ना? अगर मैं कोई और कर्व ड्रॉ कर दूं द अदर वे अराउंड लाइक दिस, इसके इंटरसेप्ट भी वही हैं। सो उन इंटरसेप्ट के साथ साथ एक और चीज भी आपने इंश्योर करनी है कि y-intercept 8 होना चाहिए। ठीक है, so this is not our final result yet। अभी तो इसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी आप देखें पॉजिटिव आएगा, अगर उसको एक्सपैंड करते हैं, अब इससे ऊपर पिछले स्टेप पे जाते हैं, इसको और एक्सपैंड करते हैं। इसको एक्सपैंड करने का क्या आएगा? we have x square plus 2x minus 4x minus 8 equals 0। we get x square minus 2x minus 8 equal to 0। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? इट्स पॉजिटिव। पॉजिटिव कोएफिशिएंट होता है तो वो कर्व कैसी होती है? वो तो यू शेप कर्व होती है। ऊपर जो कर्व है वो तो एन शेप्ड है। तो व्हाट डू वी डू विद दिस? सारी को मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव कर देंगे तो इसको हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो मेन चीज है देखने वाली ना वो ये है कि जो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट आपका हमेशा y इंटरसेप्ट होता है। जो कांस्टेंट है y इक्वल्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जो आपके पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है, ये जो c इसमें होता है, दिस इज योर y इंटरसेप्ट।
ठीक है, जिस तरह MX plus C में भी आपका जो आपका स्ट्रेट लाइन होती है उसमें भी आपका C Y-intercept होता है, क्वाड्रेटिक के अंदर भी C आपका Y-intercept होता है। ओके, सो यहाँ पे देखिए Y-intercept आपका -8 आ रहा है, ऊपर वाले कर्व के अंदर क्या है, दिस इज 8, आपने -8 को +8 करना है। So what do we do for that? We just multiply this with negative. पूरी equation को minus से multiply कर दिया. We get -x square plus 2x plus 8 equals 0. Now this is the function that we have there. इसकी उसकी ये curve आपके पास ऊपर है. जो curve हमारे पास है that is -x square plus 2x plus 8. ये curve ऊपर बनी हुई है. Now again we follow that same process. We know the x coordinate of this turning point. आप क्या करोगे? You'll just input x equal to 1 here. X equal to 1 input करोगे, you'll get the corresponding value of y at that point. So -1 का whole square into +2 into 1 plus 8, and that gives you 9. So therefore q is equal to 9 because the y coordinate of the turning point is 9. Okay, so this is how we can go from a graph back to the original equation. X intercepts को आप use करेंगे इस process में backward जाने के लिए, like we did here. हमने यहाँ से start किया, backwards गए, we got to something like this. When we get to something like this, फिर आपने देखना है ये जो y-intercept है, क्या ये वही है जो उसने दिया हुआ था? अगर नहीं है, you may have to manipulate it a bit. उसको वो आपने कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया. So this is the curve that we have now. उसमें x की वैल्यू 1 इनपुट कर दी, we get the corresponding value of the y coordinate. Yeah, this is of course easier. So I was just telling, so that some people think of that thing the first time. कि अच्छा ये points हैं इसके अंदर input कर देते हैं. That's definitely not recommended. What I explained to you before. But ये एक method है जो आपको पता होना चाहिए, right? I've seen at least one other question like this as well. In fact, अभी recently एक paper 1 में उसने किया हुआ था. They gave some equations और कुछ graphs जिनमें आप equations और graphs को match. Okay, yeah, so we figured this out here. We found out that this is our function. The function आपके पास आ गया, आपने x की value input किया, आपके पास corresponding value of y आ गई. So the other method will work in most cases as well, but that's much longer. So I would recommend that you do learn this particular method as well because ये अक्सर use होता है. As I was telling you before, recently एक पेपर में उसने मैच करने का कहा था कुछ ग्राफ्स और कुछ इक्वेशंस को, तो this concept comes in handy there as well कि आप किस तरह से x intercept को यूज करके आप अपने ग्राफ अपनी इक्वेशन पे कैसे वापस आ सकते हो. ठीक है, so it's important to know this process. Okay, let's move on to this. So there's a birthday cake that is in the shape of a cylinder. There are 2 layers of cake and 1 layer of icing. So ऊपर एक केक की लेयर है, ये जो ब्रेड होगी उसकी एक नीचे एक लेयर है और दरम्यान में there's some icing. So ब्रेड है और जो भी आपके पास चीज है. Each layer of cake has radius 10 centimeters and height 3 centimeters. Okay, so these are the heights that are given. This is 3 centimeters, this is 3 centimeters, and the radius is 10 centimeters. And the height of icing there is 12 millimeters. Okay, you have to be a bit careful about this. This is in millimeters. Calculate the volume of icing in the birthday cake, and you have to give your answer in centimeter cube. Okay, so you have to be a bit careful here. It would be easier if you just convert it right here. 12 millimeters, centimeters में कितना होगा? 12 millimeters in centimeters. 1.2. 1.2. Right, so 12 को हम 10 से divide कर देंगे. That will give us 1.2 centimeters.
ठीक है. अच्छा, so we have to calculate the volume of icing. तो volume of icing भी cylindrical form के अंदर ही है. You know that the height here of that is 1.2 centimeters. The radius is 10 centimeters. You can find the volume. ठीक है, volume क्या आएगा? It's pi r square h. Just input values there. It's pi into 10 ka square multiplied by height, that is 1.2, and that's going to give the result. Okay, so I'm getting 377 for this. 377 centimeters cube. That is the volume of that icing. Achha. Now, the top and curved surface of the birthday cake are now covered with chocolate. Okay. Now, what does it mean? The top surface, the top surface आपको नजर आ रहा है पूरा, ये पूरा, that's a circle, and the curved surface, ये जो side वाला सारा surface है, this curved surface, all of this is basically covered in chocolate now. Okay, those surfaces आपके पास covered हो गए chocolate. So calculate the area of the birthday cake that is covered with chocolate. So basically आपको area of the circle at the top वो find करना है, right? So it's the area of circular top plus the curved surface area. The curved surface area of the cake. Achha. Circular top ka area, that's just pi r square. So pi into radius ka square, that's 10. Radius is 10, so you say pi into 10 ka square. Okay. Plus the curved surface area. Remember curved surface area of a cylinder. ये cylinder है ना, cylinder का curved surface, उसका formula क्या होता है? That's 2 pi r h. अच्छा. So that's 2 pi into radius is 10. What about the height? Height आपको ये total consider करनी है. ठीक है? So that's 3 and then 3 here and this 1.2. The total is 7.2. That is the height. The 2 pi r h, that's 7.2 there. You just evaluate this and you can see what that turns out to be. So 100 pi is 314.16 plus 2 pi into 10 into 7.2. This turns out to be 452.39. 452.39. You add those two numbers and that's going to give us the total area that is covered by chocolate. That's 766.5 for me. Okay? You get it? Yes, sir. All right. Let's move on. At the part C, Anil has a slice of this chocolate covered cake now. Okay, so now you are taking a slice out of that cake. Now a slice is a prism of height 7.5 centimeters. Now remember prism क्या होता है? Prism होती है एक ऐसी shape जो repeat हो रही हो. एक 2D में shape कोई भी जो आप repeat हो रही हो बहुत ज़्यादा. एक cross section है, दोनों sides पे आप इस तरह भी समझ सकते हो कि दो side आप देखोगे उन दोनों side पे same figure होगी. So अगर आप एक side ये देखो, ऊपर वाली side ये भी एक sector है, इसी तरह से जो नीचे वाली side है वो भी एक sector है. तो ऑपोजिट एंड्स पे कोई भी दो ऐसे ऑपोजिट एंड्स हो जिनके ऊपर सेम फिगर आ रही है. इट गॉट द सेम सेक्टर हियर ऑन बोथ साइड. ठीक है, तो ये प्रिज्म है इस तरह से. दिस इज द क्रॉस सेक्शन. ये जो सेक्टर है ये सेक्टर आपका क्रॉस सेक्शन है. ठीक है, सेक्टर आपका क्रॉस सेक्शन है ऑफ दिस प्रिज्म. नाउ the top of the cake is a sector जो उसने आपको बताया हुआ है यहाँ पे. Radius is 10.3, the angle is x degrees. The volume of the slice is 200 centimeter cube. अच्छा, volume उसने दिया हुआ है. इस volume को use करके अब आपने क्या करना है? X की value figure out करनी है. So you know that the volume of the slice is equal to 200. Now it's a prism. Prism का area क्या होता है? Prism का volume. Base area into height. Base area या cross section के area into height. Height. Right. So base area multiplied by the height. That should equal 200. Now, what is the base? What is the cross section? That's a sector.
सेक्टर का एरिया कैसे आएगा? दैट्स थीटा ओवर 360. थीटा क्या है यहाँ पे? x है, थीटा की जगह x डाल देते हैं. दैट्स x over 360 multiplied by r square. रेडियस क्या है? रेडियस ऑफ द सेक्टर दैट्स 10.3. दैट्स 10.3 का स्क्वायर. ठीक है, ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ बेस multiplied by the height is 7.5. So this, all of this is equal to 200. All of this is equal to 200. Okay, now what do you have to do now? We have to find the value of x from there. वो कैसे आ जाएगी? You say x is equal to 200 multiplied by 360 divided by pi into 10.3 का square 7.5. आप उस कैलकुलेटर से डायरेक्टली इवैल्यूएट कर सकते हो इफ यू आर श्योर कि आप कोई ब्रैकेट्स में मिस्टेक नहीं करोगे. अब अगर कैलकुलेटर में पूरा डालोगे, आप यहाँ पे इसके राउंड ब्रैकेट डालोगे, इसके राउंड ब्रैकेट डालोगे ताकि कैलकुलेशन एरर नहीं हो. अदरवाइज इट्स सेफर टू जस्ट इवैल्यूएट द न्यूमरेटर फर्स्ट, उसको लिख लें, फिर आप डिनोमिनेटर इवैल्यूएट कर लें, उसको लिख लें, and that will give you the final result. So 200 into 360, that is 72,000 divided by pi into 10.3 ka square multiplied by 7.5. That gives us 2499.69. इसको divide कर लेते हैं. 72,000 divided by that gives us 28.8 degrees. That's the angle. 28.8 degrees. Okay. Any issues with this? सर जो भी मतलब बेस एरिया होगा, मतलब अगर सपोज करने अगर एक पिरामिड है तो अगर उसका अगर रेक्टेंगल है तो हम रेक्टेंगल का एरिया लेंगे ना. देखिए पिरामिड तो प्रिज्म नहीं होता ना, पिरामिड तो डिफरेंट चीज है. नहीं मैं वो अलग से कहता. पिरामिड अगर एक होता और उसकी मतलब बेस रेक्टेंगल होती. बिल्कुल, आप बेस एरिया पे रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला लगा दोगे बेस के ऊपर. बिल्कुल, जो भी बेस होगी वो उस बेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसमें क्या डालोगे. ठीक है. अच्छा, now Minail is asking what is the formula for the surface area of a prism? What is the formula for the surface area of a prism? Now I told you about this last time. An easier way to think about this is, so surface area of a prism, आप इसको ये याद रखें, surface area of the prism. surface के एरिया को मतलब ऐड कर लो ना. या सारे surfaces के एरिया को ऐड करें तो उसमें अगर आप इंडिविजुअली देखोगे, you basically have this sector. एक ये सेक्टर है, एक नीचे वाला सेक्टर है. ठीक है, ये दो सेक्टर्स तो ये है. अच्छा, so that's the first thing that you write here. Surface area of a prism, it's 2 multiplied by the area of the cross section. Cross section कह लें, बेस कह लें. ठीक है, एक तो ये हो गया. जो भी आपके पास बेस है या क्रॉस सेक्शन है, दोनों साइड के ऊपर है, उन दोनों के एरियाज को ऐड कर दीजिए. ठीक है. अच्छा, बाकी फिर आपके पास इस केस के अंदर 3 सरफेसेस हैं. जो भी आपकी शेप होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा बाकी कितने सरफेस बचते हैं. बाकी सबके एरियाज को ऐड करना है. इसमें एक तो ये रेक्टेंगल आ रहा है आपके पास. ठीक है, एक ये साइड पे रेक्टेंगल आ रहा है, दूसरी साइड पे एक आपके पास ये कर्व्ड सरफेस आ रहा है उस साइड के ऊपर. राइट, इन तीनों के एरियाज को आपने ऐड करना. नाउ द ट्रिक हियर इज, आप इसमें पता क्या करते हैं, आप क्रॉस सेक्शन का पेरीमीटर निकाल लेते हैं. क्रॉस सेक्शन का पेरीमीटर निकाल लेते हैं. Does that make sense? ये पेरीमीटर इसका जो भी होगा वो आप निकाल लोगे प्रिज्म के लिए. उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे इस हाइट के साथ. वो ये आपको क्या दे देगा? ये आपको ये पूरा कर्व सरफेस एरिया इकट्ठा दे देगा. Does that make sense? ये कर्व सरफेस एरिया नहीं, जो साइड वाले सरफेसेस हैं प्रिज्म के, जो बाकी सरफेसेस हैं, उन सब की एरियाज आपके पास इकट्ठे आ जाएंगे. So what do you do here? I'm going to write plus the perimeter of the cross section, perimeter of cross section या base, cross section को हम base भी कहते हैं, multiplied by the height,
This is how you calculate the surface area of any prism. जो भी क्रॉस सेक्शन होगा या बेस होगी उसके एरिया फाइंड करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें ऐड कर देंगे पेरीमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन। इसमें आपके देखेंगे 10.3 एक ये है, एक ये 10.3 है, ये आर्क लेंथ आप फाइंड कर सकते हैं, तीनों फाइंड कर लेंगे। उसमें आप ऐड इन दोनों को ऐड करेंगे, दैट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन, उसको फिर इस हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे और वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इज दिस क्लियर? हाइट हमेशा क्या होती है, यहाँ पे जो फॉर्मूला के अंदर हाइट हमारे पास आ रही होती है ना, हाइट बेसिकली always means the distance between the two cross sections. यानी जो दोनों एंड्स के ऊपर सेम शेप होती है ना प्रिज्म के अंदर, उनके दरम्यान में डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल अगर ऐसी आपके पास एक प्रिज्म इस तरह का हो, you have a prism like this, Toblerone, आपको पता है, it looks like this, right? So this is what Toblerone looks like, let's say. Okay, something like this, I don't know. Okay, अभी देखें ये प्रिज्म है, प्रिज्म कैसे है, you've got one triangle here, you've got one triangle here, दोनों एंड्स के ऊपर वही ट्रायंगुलर शेप आ रही है। अब इसकी हाइट क्या होगी, ये दोनों क्रॉस सेक्शंस के दरमियान में जो डिस्टेंस है दैट्स द हाइट। जो फॉर्मूला के अंदर हम हाइट लिखते होते हैं, ये आपकी डिस्टेंस होता है बिटवीन क्रॉस सेक्शन। वो डिपेंड करता है वो किस तरह से पड़ा हुआ है आपका वो आपकी वो शेप, तो वो आप कहीं पे लेंथ लग रही होगी, कहीं पे हाइट लग रही होगी, बट दैट्स व्हाट इट बेसिकली मींस, डिस्टेंस बिटवीन द क्रॉस सेक्शंस। इज दिस क्लियर? एनी इश्यूज विद दिस? नो सर मतलब जैसी भी मतलब ऐसी कोई शेप होती है मतलब इन्वर्टेड टाइप, उनमें उनका यही फॉर्मूला वॉल्यूम को याद कर लेना, बेस एरिया इनटू हाइट। इन्वर्टेड का क्या मतलब है? लाइक मतलब जैसे प्रिज्म हो गया और टोबलेरोन हो गया और ऐसी जो शेप्स होती हैं। देखिए प्रिज्म होता क्या है, प्रिज्म बेसिकली होता है कि एक आपके पास शेप है 2 डायमेंशन वाली, फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल है, दोनों एंड्स के ऊपर वही ट्रायंगल बनी हुई है। यहाँ पे क्या था, एक सेक्टर है, दोनों एंड्स के ऊपर वही सेक्टर आ रहा है, राइट? कोई भी आपकी 3 डायमेंशन के अंदर ऐसी फिगर है कि 2 एंड्स के ऊपर सेम शेप है, उसको हम कहते हैं प्रिज्म। सेम साइज की सेम शेप, राइट? इस तरह सिलेंडर है हमारे पास, सिलेंडर में क्या होता है, सिलेंडर इज आल्सो अ प्रिज्म बेसिकली, सिलेंडर भी प्रिज्म की एक टाइप है। ओके, इसमें देखें दोनों एंड्स के ऊपर क्या होता है, दोनों एंड्स के ऊपर सर्कल है, राइट? दोनों एंड्स के ऊपर सर्कल है, तो ये भी बेसिकली हमारे पास प्रिज्म की ही टाइप है। प्रिज्म वाला फॉर्मूला इस पे लगा सकते हैं आप। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होएगा, बेस एरिया, बेस क्या है, पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट एज, दैट बिकम्स पाई आर स्क्वायर एज, राइट? उसी तरह से इसमें सरफेस एरिया का वो फॉर्मूला लगाया जो मैंने राइट साइड पे लिखा है, 2 into एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, 2 into एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन बेस, दैट्स पाई आर स्क्वायर। ये हमारे दोनों सर्कल्स के एरियाज हो गए, प्लस पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, नीचे वाले सर्कल का पेरीमीटर, किसी भी एक सर्कल का पेरीमीटर वो क्या होगा, 2 pi r multiplied by height, 2 pi r h, that's the curved surface area, right? 2 pi r h। तो प्रिज्म वाला फॉर्मूला आप सिलेंडर पे भी लगा सकते हो, because that's a special type of prism as well, दोनों साइड्स के ऊपर सेम शेप आ रही है, ठीक है? यस सर। Okay, let's move on. Acha, so now we've got these parallel lines, EMF and G L N H, ये दो हमारे पास straight lines हैं, these are parallel lines, LM is equal to LN, LM is equal to LN, ये दोनों sides equal हैं, उसने आपको बताया हुआ है। और जो है we have to find, अच्छा उसने बताया हुआ GLM, this angle is 126 degrees, find FMN, FMN, that's this angle here, ये आपको figure out करना है। Give a reason for each step of your working. Okay, so let's call this angle, अच्छा ये angle आपने figure out करना है, ये angle हमें नहीं पता। Okay, now how do you figure this out?
You have to give reason for every step that you do. अच्छा, सबसे पहले देखें एक ही एंगल पता है आपको, वहीं से स्टार्ट करेंगे. This is 126. If this is 180 126, minus तो ये 126. 180 minus 126 Beautify this वो angle. straight line. Yeah, so let's Base write angle that down. same We can say the angle, हम Because लिखना है इसको alternate properly, angle. angle properly लिखना है MLN is equal to 180 minus 126. That gives you 54 degrees by angle Straight. on a straight line. This reason is important. सर मैंने सीधा स्ट्रेट लाइन लिखी है तो उससे पता चल जाता है कि कैसे मैंने किया. Yeah, that's fine. Yeah, straight line का mention जरूरी है. ठीक है, straight line mention करना जरूरी है. So that's angle in a straight line. Okay. Then once you have this angle, this is 54 degrees. अब क्या है, आपको पता है कि isosceles triangle है. This side is equal to this side. दो equal sides होती हैं, उनके opposite angles equal होते हैं. तो ये दोनों angles equal है. ठीक है? तो हम क्या कर सकते हैं? You can find any one of these angles. So अगर हम इसको x कह लें, let's say, इसको भी x कह लें, because they're both equal, इन दोनों को equal कर दिया. So हम कोई भी एक एंगल निकालते हैं, let's say LMN, ये हम डायरेक्टली किस तरह निकालते होते हैं? Remember, हम 180 टोटल है ट्रायंगल का सम. 180 में से आपने ये 54 माइनस कर दिया. ठीक है, 54 माइनस कर दिया. अब जो बाकी बचा है आपके पास, वो इन दोनों का सम है, और क्योंकि ये दोनों इक्वल है, आप इसको 2 से डिवाइड कर दोगे. You'll get the result. What do you get from this? Yes, You get 63. आप यहाँ पे क्या लिखोगे? Isosceles triangle. Then yes. Then alternate angles मतलब बन रहे MLN and EML. Yes. So the next thing that you do is, so once you find this angle here, आपको ये angle पता चल गया. So this angle is 63, and this angle is also 63. अच्छा, I can actually write the other angle here. ऊपर वाला निकाल रहा था, नीचे वाला लिखना है तो ज़्यादा बेहतर है. I can say this is the angle LNM. Okay, नीचे वाला angle निकाल लिया हमने, ऊपर वाला उसी के equal है. So now we can say these are alternate angles. उसने पूछा हुआ है. We can say the angle FMN is equal to 63 degrees as well. Why? Because these are alternate angles. Right? Straight line है, straight line से एक line जा रही है दरम्यान से, तो ये नीचे वाला angle जो है ये इस वाले angle के equal होगा. So that's also 63 degrees. Okay, so that's what you do. ये सारी तीनों steps आपने show करने हैं. इन lines के अंदर लिखेंगे हम. मैं figure देख रहा था, इसलिए मैंने ऊपर से शुरू कर दिया. It's better to write in these lines here. So आपको FMN जो आएगा, that is 63 degrees here. Okay, now let's move on. उसके बाद हमारे पास क्या है? Okay, we've got the circle now. So it's a circular measure question, not circular measure, circle theorems wala question. Okay, this part. Yes, sir. Minahil, is this okay? All right. Achha, let's look at this one. So A, B, C, and D are points on the circumference of a circle. Center O, B, D, and AC are they intersect at E. Okay, आपको नजर आ रहा है, E is the point of intersection there. BC is the diameter. Okay, ACD x है, एक angle दिया हुआ है, एक और Y angle दिया हुआ है. Find an expression in terms of x and or y for DBC. Okay, DBC कहाँ पर है? DBC, this angle here. ये figure out करना है. y by 2 Y by 2, very good. So you can say, you can consider this chord here. So ये वाली chord है हमारी, the DC. DC is making an angle at the center. Center पे एक angle बना रही है. That's why. वही chord circumference पे भी एक angle बना रही है. That angle is going to be half of this. Angle at center is twice the angle at circumference made by the same chord or the same arc.
अब क्या कहोगे यहाँ पे, अगर सेंटर पे y है तो बाहर वाला कितना आएगा, दैट विल बी y/2. जस्ट राइट y/2 एंड दैट्स इनफ. आपको रीजन का यहाँ पे नहीं कहा हुआ, तो देयर नो मार्क्स फॉर दैट, सिर्फ आपके आंसर के मार्क्स हैं. बट ऑफ कोर्स यू शुड नो द रीजन योरसेल्फ. कभी कभी वो आपको रीजन पूछता भी है, आपको लिखनी होती है. So the reason here is that the angle at center is twice the angle at the circumference. तो ये DCR का आपको ये एंगल्स बना रही है. अच्छा, next is ABD. Okay, so ऊपर हम एंगल लिख लेते हैं पहले. This is y/2. We figured that out. Next वो कह रहा है ABD, angle ABD. That's this angle here. ये एंगल figure out करें. ठीक है. Okay. Again, let's think about this. If you look at this chord here, the chord AD chord, right? आपको पता है AD chord एक एंगल B पे बना रही है, वही chord एक एंगल C पे बना रही है, right? So ABD is basically the same as the angle ACD. These are angles in the same segment, angles made by the same chord in the same segment. AD chord एक एंगल ऊपर बना रही है यहाँ पे. So one angle is this and the other is this one. ये दोनों equal होने चाहिए. If if this one is x, तो नीचे आपके पास आ रहा है, the upper one is also supposed to be x. So we say this is x here. Okay, आप लोगों ने कुछ लोगों ने वो butterfly method से किया होगा, so it's the same thing here. So we have butterfly here, right? So this angle is equal to this angle. This angle. सर ये बटरफ्लाई तो बन रही है लेकिन बहुत खराब सी बटरफ्लाई बनी है. Butterfly wings. हाँ, butterfly. बटरफ्लाई के विंग्स कट गए हैं. हाँ. Okay. Anyway, so we have सर that. ये आपने यही लिया ना B सर? Yes. सर आपने ये वाला लिया ना BACD ना? देखें, ABD आपको फाइंड करना था. मैंने ये वाली कॉर्ड ली है, AD कॉर्ड. ये कॉर्ड एक एंगल ऊपर बना रही है, ये वाला. वही कॉर्ड एक एंगल यहाँ पे बना रही है नीचे. They are both going to be equal to each other. Angles in the same segment. Angles made by the same chord in the same segment. ठीक सर. ठीक है. अच्छा, next वो कह रहा है AED. Okay, AED. Let's figure that out. AED, that's this angle here. ये एंगल फिगर आउट कर. ठीक है. अब ये एंगल तो कहीं पे भी कोई सेंटर भी नहीं है, कोई सर्कमफरेंस भी नहीं है, तो यू माइट नीड सम मोर वर्किंग केयर. अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम देखते हैं. लेट्स जस्ट मार्क ऑल द एंगल्स दैट वी नो अबाउट. तो एक तो आपको पता है BC डायमीटर था, है ना? BC डायमीटर था, उसका मतलब ये एंगल 90 होएगा, ये हमें पता है. BC और कौन सा एंगल बना रहा है, ये भी एंगल 90 होएगा. एंगल AB y/2 होगा, उधर भी वो बन रहा है. सेम सेगमेंट. कौन सा y/2 होगा? DAC. यस. देखिए, एंगल जो है वो 3 लेटर्स आते हैं, आप 4 लेटर्स बोल रहे होते हैं. दोबारा बोले. सर DA और C. DAC. Okay, yeah. So this angle here, yes, that's going to be y/2 as well. That's correct. ये y/2 होगा. Okay, but how does that help? अभी तो हमारे पास और information यहाँ पे नहीं है. So one way that I can think of right now is, उसने कोई reason तो नहीं पूछी ना यहाँ पे, reason नहीं पूछी. अब देखें, BC diameter है ना? This is the diameter. ये diameter एक एंगल यहाँ पे बना रहा है. Diameter जो एंगल बनाता है वो क्या होता है? 90. So this angle is 90. We found this angle here. ठीक है. तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पे. Angle BAC. The angle BAC is equal to 90 degrees. ये एंगल 90 बन गया. अब लिख देंगे वहां पे एंगल made by the diameter or angle in a semicircle, जो भी आपने पढ़ा हुआ है वो आ गया हमारे पास. Once we know this is 90 degrees, we know that this is x, so we can find this angle here. ये एंगल क्या हो जाएगा?
ये ट्रायंगल है ना, एंगल BAE ट्रायंगल, जो ये छोटी वाली ट्रायंगल है, इसके अंदर दो एंगल्स हमें पता है, we can find the third angle, that's BEA or AEB. Find that angle. The angle AEB is equal to 180 में से 90 भी माइनस कर दिया और x भी माइनस कर दिया, that's 90 minus x. Okay, ये एंगल आ गया, this is 90 minus x. अब आपको सिर्फ वो एंगल चाहिए जो उसने कहा हुआ था, that was AED, वो एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन. आपको ये पता है 90 minus x है, तो नीचे वाला क्या होगा, 180 में से माइनस कर दें. Angle AED therefore is going to be 180 minus, make sure to put this in the bracket now, minus 90 minus x. And that's going to give us 90 plus x. So that's 90 degrees plus x. That is the angle AED. Okay. Is this clear? Yes, sir. Acha, so Manahil, you're saying ABCD is cyclic. Yes, that is cyclic. But how do we use that? अभी यहाँ पे तो there is no way we could use that because आपको angle ये वाला चाहिए था, E के ऊपर जो angle बन रहा है, so it's not really relevant there as such. तो अभी तक तो नहीं, maybe in the next part you might have to use that. Sir, 180 साथ रहेगा इस पे? Sorry? So 180 जो है वो साथ रहेगा? कहाँ पे? 90 minus 90 plus 90 plus. You subtract कर दिया ना, 180, so this becomes 180 minus 90 plus x, so that's 90 plus x, right? ठीक sir. Acha, next is BDA, the angle BDA. Let's figure that out. BDA, where's that? That's this angle here. ये angle figure out करना है, ठीक है? ये angle figure out करना है, BDA. Now this angle is the same as this angle. ये ऊपर वाला angle भी वही होएगा, है ना? जब वो angle ये है तो ये वाला angle भी यही होएगा. So now we can figure that out using this. So Minal is saying we can find D and subtract from. सर ये इसका भी वही होगा, जैसे 90 है हमारे पास, y/2 भी है, तो वही करेंगे, 180 minus 90 minus y/2, वो पूरा एंगल दे देगा. Yeah. उसमें से x को माइनस कर सकते हैं. Yeah, very good. So now we can use the cyclic quadrilateral वाला concept if we want. वो भी use कर सकते हैं. ये side और ये side, इनका sum 180 होना चाहिए. We can use that if you want. और हम angle in the same segment वाला भी use कर सकते हैं. If we use this chord here, AB chord use करें, AB chord अगर use करें, तो हम ये angle find कर लें. अगर किसी तरह से हमें पता है triangle के अंदर ये 90 है और ये angle x plus y/2 है, तो ये बाकी angle आ जाएगा. So this angle will be the same as this angle. दोनों use कर सकते हैं, ठीक है? So let's use the cyclic quadrilateral. So what is that's easier? क्या आएगा? This is a cyclic quadrilateral. ABCD जो बाहर पूरा quadrilateral है, it's cyclic. Cyclic quadrilateral में क्या होता है? जो opposite angles होते हैं, Opposite angle 180. the sum 180 होता है, ठीक है? Okay, so opposite angles कौन-कौन से आ रहे हैं आपके पास? This angle is 90. ये angle नहीं पता हमें, ऊपर x है और y/2 है. इन सब का sum 180 होना चाहिए. Let's use that. हमें कौन सा angle चाहिए? BDA. So BDA plus, so this is BDA, ये वाला angle. इसमें प्लस कर दिया, बाकी angle कितना है? 90. प्लस कर दे 90. Plus the angles on the other side, ये दोनों angles, x और y/2 plus x plus y/2, all of this should equal 180 degrees. उन सबका sum 180 होना चाहिए. यहाँ से हमारे पास BDA आ जाएगा. Take everything to the right side. So BDA therefore is going to be 180 minus 90. That's just 90 minus x minus y/2. That is that angle. All right. ये clear है? Yes, sir.
Okay, let's move on. Question number 10. So now we have a pyramid. Pyramid को use करना है. How is BAC 90? BC diameter है ना? BC is the diameter. BC diameter है. That means this angle that this diameter is making here is going to be 90. Okay. All right. Volume of pyramid. So volume of pyramid उसमें दिया हुआ है. आपको मैंने बताया था pyramid और cone के formulas दिए होते हैं और sphere के. Pyramid के formulas दिए होते हैं, cone के दिए होते हैं और sphere के दिए होते हैं. Okay, the rest you have to remember. अच्छा, ABCDE is rectangular based pyramid. तो नीचे rectangular based pyramid का मतलब है base rectangle है और ये pyramid है. Now AC and BD intersect at F. AC and BD, they're intersecting at F here. EF is perpendicular to FC. EF is perpendicular to FC. तो आप पास ये देखें F के ऊपर एक vertical line है ऊपर. या कुछ बिल्कुल एक vertical ये लाइन है. Remember मैंने आपको क्या कहा था 3 dimension के अंदर जो भी फिगर होगी जहां पे जिस पॉइंट के ऊपर वर्टिकल बना होगा उससे सारे एंगल्स 90 निकल रहे होंगे. तो दिस एंगल इज 90 हियर, ये भी 90 है, ये भी 90 है. हॉरिजॉन्टल के साथ जितने भी एंगल बनेंगे उस पॉइंट के ऊपर दे आर ऑल गोइंग टू बी 90 डिग्री. सारे एंगल्स 90 के बनेंगे. अच्छा, उसने कुछ लेंथ दी हुई है आपको एंड यू हैव टू शो दैट EF is equal to 10.5 centimeters. EF is 10.5. EF is the vertical height there. वो आपने शो करनी है 10.5 है. तो we can make some right angled triangle here somehow. So 4 mark question. So may need to do some working. आपको पता है this is 10, this is 6. हम इस AC को figure out करें. Remember base जो आपकी rectangle है. So this angle here, this is 90 degrees. हम क्या कर सकते हैं? We can find AC figure out कर लें. AC square Pythagoras, right? So considering this triangle ACD, it's a right angle triangle, rectangle, okay, diagonal AC square is equal to 6 square plus 10 square. यहाँ से हमारे पास क्या होगा? AC की वैल्यू आ जाएगी. So ये क्या आता है? 36 plus 100 square root of 136, that is going to be 11.66. AC आ जाता है 11.66. ठीक है. AC अगर 11.66 है तो ये FC कितना होएगा? What about this length FC? ये कैसे आएगी? This is just half of this. This F is the midpoint, right? FC क्या हो जाएगा फिर? It's 11.66 divided by 2. That's going to give you something which is 5.83. ठीक है, ये आ गया. Now we have that length FC. अब आप simply क्या करोगे? अब ये वाली triangle use कर लोगे. The triangle EFC. Let's use that. You've got F here, you've got C here, you've got E here. This is 90 degrees. We know that this length is 12. We know that the base is 5.83. We can find the height there. EF आपके पास आ जाएगा. वहां से दोबारा से Pythagoras use कर लें. You know that EF का square plus 5.83 का square is equal to 12 का square. ठीक है, यहाँ से आपके पास EF की वैल्यू आ जाएगी. So EF square turns out to be 110 और EF फिर आपके पास वहां से आ जाता है 10.49, which is the same as 10.5 to 1 decimal place. Okay, so this is 10.5 to 1 decimal place. Okay, ये आ गया. Next you have to find the volume of the pyramid. Volume of the pyramid का formula आपको नजर आ रहा है. It's just 1/3 into base area into height. Just apply that formula there. So that's 1/3 into the base area. Base area कितना है? It's a rectangle. Rectangle की area 10 into 6. That's the area of the base. Into the height, that is 10.5. Just evaluate this. It was formula value input करनी है. That's 210. And that's the volume of this pyramid.
Okay. I'm just going to take a 1 minute break. There's a Azan going on here. We will continue after that. In fact, the meeting time is ending as well. I'll just restart it. I'm just restarting the meeting. Dobara join karna. Okay, so let's continue with this. We were done with the volume here. Next, we have to find, we have to calculate this angle. That's the angle DEC. Okay, DEC angle हमारे पास कौन सा आ रहा है? DEC. Okay, so we actually are looking for this angle here, DEC. ठीक है. अब देखिए जो E point है, that's directly above F here. F के बिल्कुल ऊपर है. F जो है वो D और C से same distance के ऊपर है. C से भी उतना distance है, D से भी उतना distance. That basically means ये जो triangle बन रही है, ये हमारे पास एक isosceles triangle है. So this is 12. ये वाली side भी 12 होनी चाहिए. Let's draw that triangle here. That triangle basically looks, अगर उसको 2 dimensions के अंदर बनाए, this is what that triangle looks like. Okay, so this is what the triangle looks like. We've got D and C at the base. एक ये D आ गया, यहाँ पे C आ गया. ऊपर जो top है, that is E. Okay, top E है. ये हमने 2 dimensions के अंदर बना ली. We have the lengths. This is 12. This is 12. And DC there at the bottom is 6. ये हमारे पास triangle है. हमें क्या करना है? ये angle find करना है, ऊपर वाला angle. ठीक है? One possibility is that you can use the cosine rule if you want. ठीक है? But a quicker way would be, क्योंकि isosceles triangle है, आप इसको break कर सकते हो 2 triangles के अंदर like this. आप एक line बनाओ वहां से ऊपर से. It's going to make a 90 degrees here. और इसको split कर देगी 2 parts के अंदर 3 and 3. Right? Isosceles triangle की property है, remember? इस तरह जो unequal side है उसको उसके मिड पॉइंट से अगर लाइन बनाए इस तरह से, ये हमेशा 90 डिग्रीज की बनती है और ये इक्वली डिवाइड करती है दोनों साइड्स को. ठीक है, so you can find one of these angles now. Let's call this angle theta. तो थीटा कैसे निकल सकता है? This is going to be perpendicular. जो नीचे वाली साइड है, that's 3. That's the perpendicular according to theta. 12 is the hypotenuse. तो हम sin यूज कर सकते हैं. Sin theta is equal to perpendicular, that's 3 divided by the hypotenuse, that's 12. यहाँ से हमारे पास क्या होगा? ये थीटा की वैल्यू आएगी. That's the smaller angle. It's not the complete angle, by the way. It's just one part, 1/2 of that angle. That's this much. ये angle theta है. ये आ जाएगा. So sine inverse of 14.477. Okay, so that's 14.477. 14.477 degrees. So जो angle हमें चाहिए अब DEC multiply by 2 कर देंगे. angle इसको 2 से multiply कर दें. 14.477 multiplied by 2, that will be 28.96. ठीक है, so this is 28.96 degrees. That is the angle that we had to figure out. आप इस angle को कोसाइन रूल से भी कर सकते थे if you wanted. अगर आप ये figure out नहीं होता आपसे उस point के ऊपर, you could have used cosine rule here as well. That will give you the same result. Next it says calculate the area of this triangle. This triangle area find करना है. So that's fairly straightforward as well. You have the triangle there. आप इसमें perpendicular find करना चाहते हो, कर सकते हो height of the triangle. लेकिन आपको क्योंकि angle अब पता है, you can just simply use half AB sin C. Let's say half into 12 into 12 into sine of that angle between those sides, 28.96, and that will give you the area from this. मैं वेट करी जा. Sorry?
सर मैं कह रहा था कि ग्रुप में मैसेज कर दिया करे, मैं आप वेट ही करी जा रहा था। मैं सोच रहा था शायद मैसेज आएगा कि स्टार्ट हो गई है। नहीं, मैंने आपको बताया था पहले कि एंड होगी क्लास तो फिर आपने दोबारा ज्वाइन करना है, जब तक आपको याद होएगा। सर कोई बात नहीं ओके सर, ये बस सी पार्ट एक दफा दोबारा बता दें। ओके, आई गो बैक टू दैट। सो यहाँ पे हमारे पास एरिया क्या आ गया, एरिया आ गया 34.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द एरिया, वी जस्ट अप्लाइड दिस एरिया फॉर्मूला। अच्छा, सी पार्ट में देखिए उसने आपसे क्या कहा है, आपको DEC कैलकुलेट करना है। ठीक है, द एंगल DEC ये कैलकुलेट करना है। नाउ यू गो टू दैट फिगर, ये हमारे पास फिगर थी ओरिजिनली, आपको ये ऊपर वाला एंगल चाहिए, दिस एंगल हियर। ठीक है, ये वाला एंगल। अब ये एंगल किस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, DEC ट्रायंगल के अंदर। हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल को साइड में बना लिया, हमने यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर ली 2 डायमेंशन के अंदर, द ट्रायंगल DEC। नाउ लेट्स लुक एट दिस। ठीक सर, समझ आ गई। वो एक दफा इस साइड का ले लेंगे, फिर वो यस, उसको इंटू 2 कर देंगे तो दोनों साइड से आ जाएगा। ये हमें 6 या पता था, ये 12 पता था। एक चीज जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो ये है कि ये अगर वो 12 है तो ये साइड भी 12 ही होगी। ओके, दोनों लेंथ्स इक्वल होंगी क्योंकि ये बिल्कुल F जो है वो मिड सर पॉइंट है उनके रेक्टेंगल एंगल, के बिल्कुल ऊपर है। सर वैसे तो भी वो 90 डिग्रीज बन रहे हैं दोनों साइड्स के एंगल। बिल्कुल, तो आपके पास ये आपने डिवाइड कर लिया हमको 2 पार्ट्स के अंदर, एक साइड पे एंगल फाइंड कर लिया, दूसरे के लिए बस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाए। ठीक है, अच्छा, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11 नाउ। This is transformations. Describe fully the single transformation that maps triangle A onto B. Okay. A से B पे कैसे आ रहे हैं आपको वैसे नजर आ रहे हैं, इट्स अ रिफ्लेक्शन, राइट, रिफ्लेक्ट हो रहा है। इन कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, आपको काउंट कर लें 1 2 3 3, so बेसिकली ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बन रही है ना। यस तो ये अपना एक्स एक्सिस के थ्रू, लेकिन सर इसका मतलब डिस्टेंस ज्यादा है। अच्छा, एक्स एक्सिस पे नहीं है ना, एक्स एक्सिस से नीचे है। ये सर सर मैंने ये उस आपसे पे किया कि मतलब y इज इक्वल टू 1 पे। y equals -1, so you can just find the midpoint। मान आप स्टैंडर्ड मेथड अप्लाई कर सकते हैं, आप मिड पॉइंट फाइंड कर ले, ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, उसको यूज करके आप एक स्ट्रेट लाइन बना दोगे, दिस इज योर लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। अब उसकी इक्वेशन क्या होगी, सर मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के किया था, वो सही है? वो भी दैट्स वन फाइन, यस दैट्स फाइन। सो बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आप पहले आपको फिगर आउट करना होगा कि वो कौन सा है, रिफ्लेक्शन है, रोटेशन है। दिस इज रिफ्लेक्शन, ठीक है। why is this reflection, you know that आप ऑर्डर चेक कर सकते हो, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। छोटा वाला यहाँ पे आप A डैश लिख दो, ये B डैश लिख दो, ये C डैश लिख दो। पहले ये एंटी क्लॉकवाइज ABC था, अब ये क्लॉकवाइज ABC है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई है। इसका मतलब ये है कि ये रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन के लिए आप किस तरह से फाइंड करते हो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, द इजीएस्ट वे फॉर दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स लें, उनके मिड पॉइंट फाइंड कर लें। एक मिड पॉइंट ये आ गया, एक मिड पॉइंट ये आ गया, उनको ज्वाइन कर दें, यू गेट दिस लाइन, इट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइंस की इक्वेशन इस फॉर्म के अंदर होती है, y इक्वल टू समथिंग, सो इन दिस केस इट्स y इक्वल टू -1। so you'll say this is a reflection in the line, or you can say reflection with the line of reflection as y equals -1। that is your transformation। तो उसके बाद में कहते हैं triangle A is mapped onto C by the single transformation H, find the matrix representing H। okay, A is mapped onto C, A को C पे मैप कर दिया। so now what kind of a transformation is this, size same है, तो enlargement नहीं है, आपकी shape टेढ़ी हो गई है, so it's not translation either। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। yes, so it's a 90 degrees anti-clockwise rotation। जब मैट्रिक्स की बात होती है तो आपको पता होना चाहिए वो सेंटर ऑफ रोटेशन जो है वो ओरिजिन ही होता है, ओरिजिन के अलावा कोई और सेंटर ऑफ रोटेशन आपके पास नहीं आ रहा होता।
सॉरी अबाउट दैट, जब मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स आपको सिर्फ उसी का पता है ना, सेंटर रोटेशन ओरिजिन हो या सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट 0 हो, ओरिजिन हो, सिर्फ उसी पॉइंट के लिए आपको पता है। तो ये से दिस इज द सेंटर ऑफ रोटेशन, आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो। ये पॉइंट जो है रोटेट होके 90 डिग्रीज यहाँ पे चला गया, ठीक है। इसी तरह से बी पॉइंट जो है रोटेट होके इधर आ गया, मार्क कर लें, दिस इज बी डैश, दिस इज ए डैश, दिस इज सी डैश। तो 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, ये तो हमें नजर आ रहा है 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ओके, अब इसका मैट्रिक्स क्या होता है, लेट्स फिगर दैट आउट। हम कौन से पॉइंट्स कंसीडर करते हैं हमेशा, एक 1 0 और 0 1, ये दो पॉइंट्स कंसीडर कर लिए, ठीक है। 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी तो 1 0 कहाँ चला जाएगा, 1 0 रोटेट होकर 0 1 पे चला जाएगा, so that's your 0 1 here। 0 1 कहाँ चला जाएगा, वो इधर आ जाएगा -1 0 पे, so you get -1 0 here। That's the matrix that represents this transformation। Okay, is this clear? Yes, sir. अच्छा, so how do you find the center of rotation, by the way? सेंटर ऑफ रोटेशन यहाँ पे तो खैर काफी ऑब्वियस था इसकी ओरिजिन, क्योंकि उस मैट्रिक्स की बात की थी ना उसने। जब वो मैट्रिक्स की बात करता है तो आपको पता होना चाहिए ओरिजिन की ये बात होती है। अगर कुछ और होता तो आप सेंटर ऑफ रोटेशन किस तरह से फिगर आउट करते हो? सर हम दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं एंड जहां पे वो कट कर होंगे वो हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन। एग्जैक्टली, कोरिस्पोंडिंग पॉइंट्स लेंगे, कोरिस्पोंडिंग पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल सी और सी डैश, इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दे। ओके, वो इस तरह कुछ हो सकता है, बन रहा है समथिंग लाइक दिस। फिर आप बी, लेट्स से ए डैश और ए, इनको ले लें, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दें, इट मे लुक समथिंग लाइक दिस। जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, दैट विल बी योर सेंटर ऑफ रोटेशन। तो आपके पास वो आ जाएगा। तो आपने अगर एंगल फिगर आउट करना हो तो क्या करोगे, कोरिस्पोंडिंग पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे सेंटर के साथ, कोई भी दो कोरिस्पोंडिंग पॉइंट्स, और इनका एंगल फाइंड कर लोगे। ये एंगल फिगर आउट करोगे, this turns out to be 90 degrees and this is 90 degrees anti-clockwise rotation। All right, is this okay? यस सर। सर बस Yes, एक मिनट sir. बी पार्ट दिखाइएगा। Okay, so I think tomorrow inshallah we will be doing transformations, I'll confirm, but most likely tomorrow we will have a session on transformations, but I'll confirm that। उसमें फिर हम hopefully ये सारी चीजें एक दफा quickly। सर कल ट्रांसफॉर्मेशन ही कर लें बिकॉज़ वहां पे यस सर। सर ये मैट्रिक्स वाली जो है ना सर, ये सर जो मैट्रिक्स वाला होता है डिटेल में सर बता देगा, और सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस तरह बनाते हैं वो भी। Okay, so we'll try to वो do that मतलब tomorrow inshallah, but I'll confirm of course। क्या हो गया, got erased for some reason, just do that again। तो मैट्रिक्स हमारे पास क्या आया था, ये 1 0 कहाँ चला जाएगा, 0 1 पे चला जाएगा 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के बाद, so we get 0 1 here। 0 1 कहाँ चला जाएगा, -1 0 पे, so we got -1 0 here। So that's the matrix that you have। 90 degrees anti-clockwise rotation about origin थी, about 0 0 with 0 0 as the center of rotation, उसका matrix ये होता है हमारे पास। ठीक है, वो matrix याद करने का तरीका हम कल इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, transformation M is a reflection in the line x equal to 2। Okay, let's draw that there। x equal to के अंदर reflection है, so x equal to line कहाँ पर होगी, it will be this line here। x equal to के अंदर एक reflection है, transformation M। Okay, so the line x equal to 2। Now transformation R is a rotation 180 degrees about the origin। Okay, origin के about 180 degrees rotation। Triangle A is mapped onto D such that RM of A is equal to D। Draw and label the triangle D।
draw and label the triangle D using that. So how do we do this now? देखें, जब भी आपके पास ये फॉर्म लिखी होती है, आपने देखना है सबसे पहले क्या अप्लाई करना है। ए ट्राइंगल के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगी कोई, कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन पहले होगी? जो उसके करीब है। M is going to be applied on that first. M पहले अप्लाई होगा A के ऊपर जो उसके नियरेस्ट है, तो M अप्लाई करें A के ऊपर। M क्या है? Reflection in the line x equal to 2. Okay, let's go there. Reflect triangle A in the line x equal to 2. क्या हो जाएगा? Reflection के बाद this triangle is going to look like this. ये आपके पास ये ट्राइंगल बन जाएगी। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन होगी x इक्वल 2 के अंदर। अच्छा, उसके बाद R अप्लाई करना है। R क्या है? 180 डिग्रीज रोटेशन अबाउट द ओरिजिन। ओके, क्या मतलब? आपने बस देखना जो ऊपर पॉइंट था उसी तरह से नीचे उठा के उसको ले आना है। ओरिजिन से आप बस ये कर सकते हो, आप ये एक रूलर रखो, जितना ओरिजिन से एक साइड पर है उतना डिस्टेंस आप उसके दूसरी साइड पर लगा दो। सो ओरिजिन से ये 2 यूनिट्स ऊपर है, 2 यूनिट्स नीचे ले जाओ, एक पॉइंट आपके पास ये आ गया। ये वाला पॉइंट किधर है? ओरिजिन से इस साइड के ऊपर, इसकी ऑपोजिट साइड आप यहाँ पे जाके इधर चले जाओ। दैट्स दिस पॉइंट, that corresponds to this point here. ठीक है, और जो ऊपर वाला पॉइंट 5 के ऊपर था वो कहाँ चला जाएगा? इसी के ऑपोजिट साइड पे -5 के ऊपर। So this is going to be a final triangle that you get. That is look like this. ये आपकी फाइनल ट्राइंगल होगी, आप लेबल कर दोगे D. This is D. ऊपर वाली को बेशक आप erase कर दें बाद में, उसकी जरूरत नहीं है। That was just an intermediate, so that's your triangle D there. Is this clear? सर रिफ्लेक्शन के बाद जरा बताइएगा फिर से। जी सर। Reflection जब हो गई उसके बाद आपने रोटेशन करनी है 180 डिग्री। 180 डिग्री रोटेशन कैसे करते हैं? 180 डिग्री रोटेशन कैसे करते हैं? 0110 को मल्टीप्लाई करके, मतलब ए का पॉइंट दिया एंड उसको उसके मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं वो, बट दैट्स वेरी लॉन्ग। आपको वैसे भी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ग्राफ्स को देख के किस तरह से रोटेट करेंगे। आपको पता है कि इंटरमीडिएट जो है वो स्टेप ये था, दिस वाज द ट्रायंगल। रिफ्लेक्ट तो कर लिया था ना हमने, रिफ्लेक्ट करने के बाद इट लुक्ड समथिंग लाइक दिस। सो माय स्ट्रेट लाइंस आर नॉट वेरी स्ट्रेट। ओके, ये तो रिफ्लेक्शन के बाद ये तो आ गया था आपके पास। ठीक है, लेट्स कंसीडर दीज पॉइंट्स। इसको मैं कहता हूँ x, लेट्स से, इसको मैं कह देता हूँ y, इसको मैं कह देता हूँ z। अभी x पॉइंट को लेकर आने आपने 180 डिग्री रोटेट करना है। ठीक है, ओरिजिन के ऊपर करना है आपको। सिंपली करना ये है, ऊपर की तरफ जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ऑपोजिट नीचे साइड पे ले जाएं। सो x पॉइंट यहाँ पे इधर आ जाएगा, दिस इज x पार्ट। ठीक है, इसी तरह से ओरिजिन से y को देखें, इस साइड पे इधर ये है, उतनी ही लाइन एक्सटेंड कर दे नीचे वाली साइड के ऊपर। रूलर यूज करेंगे ना आप, रूलर रखेंगे जितना ऊपर को है उतनी ही लेंथ नीचे को ले जाएं, ये आपका आ जाएगा पॉइंट y बार। इसी तरह z is 5 यूनिट्स अबव द ओरिजिन, उतना ही ऑपोजिट साइड पे ले जाएं, तो यहाँ पे आ जाएगा z डैश के ऊपर। सो दैट्स योर ट्रायंगल। मैट्रिक्स को यूज करके कर सकते हैं आप, बट दैट्स ऑफ कोर्स गोइंग टू टेक अ बिट मोर टाइम। वो अगर आपको याद है कि कोऑर्डिनेट्स वाला जो होता है कि अगर आपके पास x y कोऑर्डिनेट्स हो तो 180 डिग्रीज रोटेशन के बाद x y के जगह कुछ और यूज कर लें, जैसे a b यूज कर लें। a और b आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं ओरिजिनल, तो 180 डिग्रीज रोटेट करते हैं नेगेटिव हो जाते हैं तो क्या होता है? माइनस नेगेटिव भी हो जाते हैं या माइनस a माइनस b हो जाता है, दोनों नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, तो जो x था वो 0.2 था पहले, 0.2 जो है वो 0-2 बन गया। y जो था that was 1 and 2, it becomes -1 and -2. z was 0.5, it becomes 0-5। सारे जो है वो नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाते हैं।
180 डिग्रीज रोटेशन के लिए, ठीक है। बल्कि वो फिर हमने ये अपना ट्रांसफॉर्मेशन सर ऐसी ही सीखी हुई है, साइन चेंज वगैरह करने से ऐसी सीखी हुई ठीक है, लेकिन उसमें वो रट्टा है, फिर आपको याद होना चाहिए सब कुछ। सो आई पर्सनली सर, वही फाइंड, तो है ना, आप वो भूल गए चीजें। हाँ तो तब वही ना, वो फिर आपको वो है कि एग्जाम्स नाइट पे आपको फिर जो है वो पूरा एक दफा रट्टा आप जो है ना वो प्रॉपर करके जाएंगे, ताकि आपको भूले नहीं। अगर कॉन्सेप्ट से आपने किया हो तो फिर वो भूलता नहीं है, उसका ये फायदा होता है। बट इट्स ओके अगर आपने उस तरह किया हुआ, इफ इट वर्क्स फॉर यू दैट्स ओके। मेक श्योर दैट यू रिवाइज ऑल ऑफ दैट बिफोर द एग्जाम नाइट, ठीक है। ये फिर भी आपको थोड़े बहुत याद रह सकते हैं। मैट्रिक्स वगैरह आप रट्टा लगाने बैठेंगे ना, वो नहीं याद होगा आपसे, याद हो जाएगा लेकिन उसमें बहुत ज्यादा चांस है उसको भूलने का। मैट्रिक्स आप जरूर उसको प्रॉपर्ली सीखेंगे, किस तरह से इन दोनों पॉइंट्स को यूज करके 1 0 यूज करके और 0 1 यूज करके आप किस तरह से कोई भी मैट्रिक्स बना सकते हैं। We will discuss that tomorrow inshallah, ठीक है। यस सर, ओके सर। Okay, any issues with this? सर Yeah. सर हम सर नेक्स्ट जब टाइम कल आप कौन सा पेपर करेंगे? नेक्स्ट जो है अब हमें 2020 अक्टूबर नवंबर पेपर 2 वेरिएंट 2 करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम ट्रांसफॉर्मेशंस करना चाहते हैं और स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी वो भी हम करना चाहते हैं। सो वी वांट टू कवर द टॉपिक्स फर्स्ट नाउ, उसके बाद फिर हम पेपर्स पर देखेंगे। अक्टूबर नवंबर का वेरिएंट 2 करेंगे, फिर हमारे पास अगर और टाइम हुआ तो हम इन दोनों के वेरिएंट्स 1 भी करेंगे, मई जून के और अक्टूबर नवंबर के वेरिएंट्स 1 भी करेंगे, ठीक है सर। ठीक है। सो हम अभी पहले टॉपिक्स पे जाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे और वो करेंगे स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। आई एम प्लानिंग कि कल हम ट्रांसफॉर्मेशंस कर लें और परसों हम स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी कर लें, बट इट्स टेंटेटिव फॉर नाउ, आई विल कंफर्म। तो इंशाल्लाह सर कल क्या टाइमिंग रखनी है? अराउंड द सेम टाइम, अराउंड 3 o'clock। ओके सर। 3 बजे के आसपास ही होगा सर मोस्टली। कल आप ये भी बताई जाना साथ साथ जो ये शॉर्ट टिप्स होती हैं कल हैं, ये 180 पे -a -b ये भी साथ साथ करी जाएगा। Yeah, okay, I'll do this as well. So we will do the ताकि वो concepts, yeah, and yes also this, yes, yeah, ठीक है। फिर एक दफा नोट कर लें, अगर आपको रट्टा लगाना है तो आप लगा लें, लेकिन आपके एग्जाम नाइट से पहले you have to be very sure that आपको सारे याद हो। जी, अनीशा लैग हो रहा है।